सो आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगर एफ टी एक फंक्शन है हमारे पास जिसकी डोमेन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज़ 0 to t, then its Laplace transform is an integral which is defined like this. सो एफ टी अगर कोई फंक्शन है उसको हम e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं 0 to t विद रिस्पेक्ट टू t। जो फंक्शन हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे लाप्लास ऑफ ए फंक्शन एफ टी, स्मॉल एफ टी, और जो आंसर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ फंक्शन से। सो इन जनरल वी कैन से कि अगर g कोई फंक्शन है तो उसके लाप्लास को हम कैपिटल G ऑफ s से डिनोट करेंगे। सो बेसिकली ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का इवेलुएट कैसे करते हैं हम। Now we look at some examples first. So let's take a constant function 1. See this example. इस केस में हमारे पास फंक्शन 1 है ऑन होल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी विच इज सेम एज दिस, और e टू द पावर माइनस एस टी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, और t का कोफिशिएंट माइनस s है तो माइनस s से हमने डिवाइड कर दिया विच इज सेम एज माइनस 1/s। अब इसमें लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/s e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। सो दिस वैल्यू इज 0, this value is 1, and minus 1 plus 1, so we are left with 1/s. So this is the answer. Okay, so next we look at the Laplace transform of the exponential function e to the power at, where a is any constant. So in this case ft is e to the power at. Now we want to find the Laplace of this function ft. So by definition Laplace of this function e to the power at is e to the power minus st into e to the power at integration from 0 to infinity, which is equal to this, because this value can be written as 0 to infinity e to the power a minus st. So if we integrate it, then integration of this is e to the power a minus st by a minus s, because this is the coefficient of t. We are taking limit from 0 to infinity. So here this integral gives us, if you take minus common from this part, so we are left with s minus at. In denominator we are not taking common, and now take 0 to infinity. Now this is equal to 1 by a to the power a minus s e to the power minus infinity. So if you put t equal to infinity into some fixed value, so if this value is greater than 0, then this is e to the power minus infinity, and minus, if we put t equal to 0, then we get e to the power 0. So it is 0, it is minus 1. So if we multiply this minus 1, so we get this formula 1 by s minus a, because we can multiply by minus 1 in denominator and numerator as well. So Laplace transform of e to the power at is this, provided this condition satisfies s minus a greater than 0. So finding Laplace transform of any function, in general it is not easy, और प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो ये प्रोसेस हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टीज चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें
कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जैसे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के केस में करते थे, फॉर एग्जांपल वी नो दैट dy dx of f plus g function at point x is same as dy dx of f plus dy dx of function g provided f and g both are derivable। इट मीन्स कि अगर दो फंक्शन डेरिवेबल हैं किसी पॉइंट x के ऊपर तो उनके सम फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इन दिस वे। सेम रूल हमें इंटीग्रेशन के लिए पता है कि दो फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, लाइक f और g का अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो उनके सम का हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सो बेसिकली dy dx एंड इंटीग्रल of a function, these two are also some kind of transforms, okay, or we can say these two are also some kind of operators। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक ऑपरेटर है जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है। ओके, सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी लाप्लास मीन्स our assumption is that ft and gt are two functions whose transform exist. Here transform means Laplace transform exist. Then for any constant a and b, we can find the Laplace transform of this expression. It can be said as linear combination of function f and g कि aft plus bgt का लाप्लास क्या होगा। हम a को कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, लाप्लास f के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली b को हम कॉमन निकाल सकते हैं और लाप्लास को बाहर निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी इस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के कारण ट्रू होती है। एज वी कैन सी इन द प्रूफ दैट दिस इज ट्रू बिकॉज इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेशन, और यू कैन से इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म सो दैट वन गिव्स दिस इक्वल टू दिस। हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ए को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ से बी को कॉमन निकाल लिया। बट दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ। सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी। सो बेसिकली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज सेम एज ए टाइम लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी टाइम्स लाप्लास ऑफ जी टी। So now we are going to see some applications of theorem 1, means how we can use this expression to find the Laplace transform of some functions. So in this example we want to see that what would be the Laplace transform of cos hyperbolic at and sin hyperbolic at। so ये हमें पता होता है कि cos hyperbolic फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स कोस हाइपरबोलिक ए टी इज सेम एज 1/2 e to the power at प्लस e to the power e। सो बेसिकली अगर हम लिखें तो साइन हाइपरबोलिक थीटा जो होता है वो इसके इक्वल होता है -θ/2, एंड कोस हाइपरबोलिक थीटा जो होता है वो थीटा प्लस e to the power -θ/2। सो इन दिस केस वी हैव at, सो जस्ट रिप्लेस्ड theta by e to the power at in both of these expressions। तो cos hyperbolic at हमें ये मिला, sin hyperbolic at हमें ये मिला। now Laplace of this is same as Laplace of this। now here this can be written as half of e to the power at plus half of e to the power -at। now we want to apply Laplace at this, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर लाप्लास इसका कैलकुलेट करेंगे। सो दोनों में 1/2 कॉमन है तो कंप्लीट 1/2 बाहर निकाल लिया, ये आ गई टर्म। e to the power at का हमने देखा 1/s माइनस ए होता है, और e to the power माइनस ए का अगर हम देखें तो a को माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। इस केस में a को अगर माइनस ए से रिप्लेस करेंगे तो वी वुड गेट s प्लस ए। अब अगर हम एलसीएम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, सॉरी एलसीएम अगर कैरी आउट करेंगे तो वी वुड गेट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2s हमें मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी।
Similarly, we can see that Laplace of sine hyperbolic at is this. So in this way we can apply that linearity property of Laplace transform. कैसे आप linearity property को apply कर सकते हो. Next we have formula for Laplacian of cos omega t and sin omega t. So cos omega t का जो Laplacian आएगा हम उसको LC लिख लेते हैं, और sin omega t का जो Laplace ट्रांसफॉर्म आएगा उसको हम LS लिख लेते हैं. Here S represent sin and here C represents cos function. So by formula या by definition of Laplace transform, this value is e to the power minus st cos wt dt equal to, यहाँ पे हमने by parts rule लगा दिया. So we are taking this as a first function and this as a second function. You consider this as a first function, you consider this as a second function. So first function is as it is, second function का इंटीग्रेशन हमने कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो कोफिशिएंट माइनस एस था उससे डिवाइड कर दिया, पूरे पे हमने लिमिट लगा दी 0 to infinity. माइनस कोस का हम डेरिवेटिव करते हैं जो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा इंटू ओमेगा आएगा, ये रही टर्म. ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा तो ई टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस आएगा. सो दिस माइनस माइनस इज प्लस एंड दिस एस इज कैरिड आउटसाइड, सो वी आर लेफ्ट विद दिस. So this means LC is equal to, here we take infinity, limit infinity and 0, cos 0 is 1, e to the power 0 is 1 and माइनस करेंगे ये टर्म तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/s आ जाएगा. सो बेसिकली व्हाट वुड हैपन दैट कि अगर हम t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे सो दिस वैल्यू शुड बिकम 0. नाउ लुक एट इट, दिस टर्म इज माइनस 1/s e to the power minus infinity into cos omega into infinity. This we have, but cos is a bounded function whose value lying between minus 1 and 1, so this value is always lies between minus 1 and 1. Okay, so basically this is a finite value and e to the power minus infinity is 0, so this is minus 1/s into 0. Now minus minus plus 1/s, and if you put t equal to 0 we would get 1. So this term is 0 plus 1/s. So basically this limit is equal to 1/s. This is. In the similar way we see that Laplace transform of sine function is this. Now again we are applying that by parts rule. So e to the power minus infinity, this gives 0, and so this is minus 1/s e to the power minus infinity, some finite value say h, minus e to the power 0 and sine 0 which is equal to 0. So this value is 0 and this value is 0, so basically this limit is whole 0. So this value is whole 0. Next we see that this is by parts. No, this is nothing but this whole value is Laplace transform of cosine function, so this is w/s. Now you just put here, so what we would get is LC equal to 1/s minus w/s. This is the value of LS, means w/s LC. So the terms containing LC we are combining together, so this is LC, here 1. This we take left side, we get w square by s square equal to 1/s. So this is LC equal to, we take LCM here, so we get s square plus w square by s square equal to 1/s. This 1s is cancelled out, so we get LC equal to, by cross multiplication s goes above, this term come down. So this is Laplace of cos. Similarly we see that, so this we have obtained, and Laplacian of sine we would this. Okay, so these are some applications of
first linear property of Laplace transform. So now we are moving to solve some exercise problems. So basically this is the table which you should remember and verify that this holds in general. So this one we have obtained, this one we have calculated, this one, you can try this one also, okay, this one also. So this one is also left as homework. So here we want to solve that let's say you want to solve question number 4. So in question number 4, our ft is cos square omega t, which can be written as 1 plus cos 2 omega t by 2, right? This is a trigonometric formula, so this is 1 by 2 plus 1 by 2 cos 2 omega t, right? Now we want to find Laplace of ft. So this means Laplace of ft means this equal to this, means 1 by 2 plus 1 by 2 cos 2 omega t. This is equal to Laplace of 1 by 2, and 1 by 2 is constant which can be taken outside. It means this is Laplace of 1 plus 1 by 2 again constant. This is Laplacian of cos 2 omega t. So Laplace of 1, ये हमने देखा था कि 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो आएगा 1 by s, ओके, दिस इज, एंड कोस ओमेगा टी का ये आता है, लेकिन हमारे केस में कोस ओमेगा 2t है. सो कोस 2 ओमेगा टी है, तो ओमेगा की जगह पे हम 2t पुट कर देंगे, यानी लाप्लासियन ऑफ दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर. दैट्स ऑल we would get, okay. So this is our omega. So 1 का हमें पता है, Laplacian of 1 हमें पता है, Laplacian of cos 2 omega t हमें पता है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. So we would get the answer 1 by 2 into 1 by s plus 1 by 2 into s by s square plus 4 omega square. So if you want to write it more precisely, so this is 1 by 2, and if you take s and s square plus 4 omega square LCM, then this term will get multiplied here, means s square plus 4 omega square. This s would be multiplied here, means 2s square plus 4 omega square. This is, and if you take 2 common, so 2 would get cancelled out. Its answer is s square plus 2 omega square by s into s square plus 4 omega square. This is the answer.